So, hello everyone. From now on, we start with industrial relations, so EPFO. So, all the syllabus है हम लोग ने पिछले क्वेश्चंस के हिसाब से को cater किया हुआ. As you can see, we have covered every important topic that has been asked in the previous year question. और उसके बाद ये पूरा content from Indian Constitution to industrial relations, collective bargaining, to workers' participation in management, industrial dispute settlements, discipline and grievance redressal, employers, organization, trade unions, labor welfare, social security, and all the acts and labor codes, even the latest labor codes, we have discussed thoroughly in our content, all the authorities and organizations in India, and even international organizations. Government schemes, we have also covered in our content. So, in this lecture series, we'll start with the industrial relations, chapter 2, because Bhavya ma'am will teach you Indian Constitution and labor laws. So, I'll start with industrial relations. So, this is our topic, industrial relation we are talking about. So, what do we mean by industrial relations? Industrial relation is a two-word statement which is comprised of the word लोग बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में. These are two words. इन दोनों वर्ड्स का अगर हम लोग मीनिंग समझ ले तो यहाँ कैन अंडरस्टैंड व्हाट मोटा मोटी कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या है. So it comes with the word industry and the relations. Industry, we all know, any productive activity that इसमें लोग engaged हैं. And relations mean whatever groups, people, and even stakeholders that are involved in this industrial activity, and the relationship between them is known as industrial relations. तो एक और तरीके से समझ सकता है. ये तो theoretical हो गया. Now we'll understand the practical applications of this. Suppose we take a company, Maruti Suzuki. If we talk about the major stakeholders, we'll not talk about the details of it. The major stakeholders. So what do you think major stakeholders are? First, we can say the company itself, or in theoretical terms, the employer, which is also the promoter of production. And the another one is employees, who are working over there for wages. Third one is government. आप सोचेंगे कि गवर्नमेंट कंपनी के अंदर कहाँ से आती है, बट गवर्नमेंट इज एवरीवेयर. गवर्नमेंट, whatever policy the government makes,
It caters to both of them because government makes policies for the welfare of not only employees, but it also makes provisions so that workers get safe environment. Employers work in a in such a manner that employees get a dignified existence. You have to understand this. And last but not the least, stakeholder, trade unions. In generic sense, trade union is a union of workers. अगर जनरल टर्म में अगर हम बात करें, वर्कर्स का यूनियन है. इट इज अ कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन. Collective organization which has been made to make sure that workers get their due. अब वर्कर्स को कोई ग्रीवेंस है तो वो अकेला तो नहीं जा सकता. दे हैव टू work in a union so that their collective voices can be heard. Suppose long working hours का issue है. अब एक वर्कर फील करेगा तो it doesn't mean anything. But if whole union will feel like that, or the collective of workers will feel like that, then the management will also look into it and will redress their issue. So these are the major stakeholders that are within the industry. So as we can say, employer, employee, government, and trade unions, which is also a part of employee, but the relationship amongst themselves this whole set, we call it industrial relations. मोटा मोटी हम लोग ने समझ लिया कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन जेनेरिक सेंस क्या है. ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके इवोल्यूशन का. व्हाट यूज्ड टू हैपन बिफोर इंडिपेंडेंस and what happened after independence. So we'll just have a look at the notes and we'll see how these things evolved, because trade unions were not in existence until the ideology of communism evolved. So they didn't become prominent until then. There were some organizations, but formally trade unions were not there. अब इवोल्यूशन जानने के लिए हम लोग को थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा. आई होप एवरीवन लाइक्स हिस्ट्री. इफ नॉट, हम लोग देख सकते हैं इसको. तो स्टार्ट हम लोग करेंगे प्री 1918 से. प्री 1918 और हम लोग इसको मिड 19th सेंचुरी भी बोल सकते हैं. अब मिड 19th सेंचुरी ही के, व्हाई नॉट बिफोर दैट आल्सो, बिकॉज मिड 19th सेंचुरी, दैट मीन्स द पीरियड लगभग मोटा मोटी फ्रॉम 1840s to 60s, if we take a 20-year span, this was the period where Indian industrialization, Indian
industrialization was on full swing. एकदम तेजी से बढ़ रहा था ये। हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जूट मिल्स, कॉटन मिल्स, were on the rise during this period. Even we have also learned that during the reign of Governor General Dalhousie, railways also started in India. So this was the period of industrialization, or the start of industrialization, or the peak of industrialization, you can say. So obviously, whenever there has been an industrialization, such as in England, तो जो मेजर इश्यूज, जो कॉमन इश्यूज इंग्लैंड में आते थे, वही सेम इंडिया में आना स्टार्ट हो गया. व्हाट वर दोज इश्यूज? बेसिक से कॉमन से इश्यूज हैं. जैसे अब ऑब्वियसली जो इनिशियल इश्यूज आएंगे दैट हैजंट बीन रिजॉल्व टिल नाउ, दीज वर लॉन्ग वर्किंग आवर्स, unhygienic or even unsafe working conditions. उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो चाइल्ड लेबर, नो हॉलीडेज. These were the major issues जो इंडिया में मिड 19th सेंचुरी में आना स्टार्ट हो चुके. एंड ऑब्वियसली अब जब इश्यूज है तो देर विल बी प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस, और इफ नॉट प्रोटेस्ट देन देर विल बी सम वॉइसिंग ऑफ प्रोटेस्ट कि अगर दिक्कत है तो हम बताएंगे. whatever authority that we need to speak, be it colonial authority, जो ना सुने मे बी, but all the people will somehow निकाल लेंगे रास्ता. So they started forming organizations, not official but some collective organizations. And the first instance we know of, and that is very famous, is of Indigo movement. During 1860s. इंडिगो मूवमेंट के टाइम पे all the indigo cultivators voiced their opinion, and then the government at the end listened to them and they made Indigo Commission. Okay, these are the major issues that has started industrial relations in our country. And this has been asked in previous year question of civil services in 2018, that who wrote Neel Darpan, and not exactly who wrote Neel Darpan, but there was some chronological question. So this was written in 1860. So Deen Bandhu Mitra was a dramatist. He wrote Neel Darpan to show the hardship of cultivators and also the plantation workers. Indigo movement का जितना भी portrayal towards the government or towards the people was totally dedicated to Deen Bandhu Mitra. As you can see, the British colonial government appointed Indigo Commission. Now we will talk about the major issues which the industrial workers were facing, which I told you earlier.
long working hours, unsafe condition, unhygienic condition, child labor. These were the conditions. So to rectify those things, the colonial government formed first factory commission under the chairman Arbuthnot. Okay. So as a result of this commission and through the recommendations of this commission, the government passed Factories Act 1881. It is very important to yaad rakhna in terms of EPFO, even for civil services. This Factories Act is important because it was the first act that uh, was the first act which tried to rectify the issues of industrialization in India. Although it is written that it hasn't been inadequate to meet the evil of child labor and protect the women workers. But what were the major provisions of it? I'll tell you. Factories Act. So first of all, they recognize that child labor was an issue, but they didn't recognize that they didn't wanted to eradicate this whole child labor thing. They only did reduce working hours, working hours reduction. वर्किंग आवर्स का रिडक्शन दे दिया, चाइल्ड लेबर वैसा का वैसे ही रहा. उसके बाद they have given working holiday, oh sorry, just holiday, 1 day holiday they gave. तो मोटा मोटी बेसिक रेक्टिफिकेशन दे ट्राइड टू गिव और उससे कुछ हुआ नहीं. दैट्स व्हाई दे सेड दैट द एक्ट हैज बीन inadequate to meet the evil of child labor and protect the women workers. और obviously यहाँ पे फिर issue आएंगे, continuously people will continue to protest. Okay, so I'll just take a 5 minutes break.
हेलो हेलो। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग मिड 19th सेंचुरी की बात चल रही थी। वी एक्सप्लेन दैट मिड 19th सेंचुरी से इश्यूज आना स्टार्ट हुए बिकॉज दिस वाज द पीरियड ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड वी ऑल्सो सीन इंडिगो मूवमेंट, दीनबंधु मित्रा, नील दर्पण। हम लोग ने फैक्ट्रीज एक्ट 1881 भी देख लिया। इट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट फैक्ट्री कमीशन। उस चेयरमैन वाज आरबत नॉट। ठीक है, मेक श्योर यू लर्न दीज थिंग्स। अब हम लोग बात करते हैं कि फैक्ट्रीज एक्ट 1881 के बाद क्या इश्यूज ठीक हो चुके हैं। लोग ने ये भी पढ़ा कि दिस एक्ट वाज अनेबल टू मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ चिल्ड्रन एज वेल एज वुमेन। तो हमको फिर ऑब्वियसली लाजमी सी बात है कि वो दोबारा अपना प्रोटेस्ट वॉइस करेंगे। ईच एंड एवरी इंडियन विल कंटिन्यू टू प्रोटेस्ट, एवरी इंडियन वर्कर्स। तो 1884 में द गवर्नमेंट started another factory commission. In the same year, N.M. Lokhande. Remember this name? This is very important. Mr. N.M. Lokhande. He's like a pioneer of workers movement. इन्होंने ये सारी चीजें स्टार्ट करी थी। As you can see, in the same year, he was based on Bombay. बॉम्बे से थे वो। उन्होंने $53 वर्कर्स से एक मेमोरेंडम साइन करवाया। इसमें उन्होंने अपने जो बेसिक इश्यूज थे, जो हम लोग ने पहले भी बात कर रहे थे, सच एज कंप्लीट डे रेस्ट ऑन संडे, half an hour recess, working hours between 6:30 to sunset, the payment of wages not later than 15 of the month. हम 3-4 तारीख हो जाती है पेमेंट की, तब दिक्कत आने लगती है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 15 के बाद भी नहीं मिलती थी सैलरी। जो इन वर्किंग कंडीशंस में पीपल यूज टू वर्क ओवर देयर, तो सबसे मेजर चीज, अनसेफ वर्किंग कंडीशंस में काम कर रहे हैं तो वी वांट कंपनसेशन फॉर इंजरीज। इवन नाउ हम लोग सुनते हैं कि कितने प्लांट्स में एक्सीडेंट्स हो गए, मशीन्स ब्रेक डाउन कर गई एंड द पार्ट्स जो मशीन से ब्रेक डाउन हुए वो किसी के हाथ में लग गए तो हाथ टूट गया। तो नाउ कंपनीज गिव वेरियस कंपनसेशन टू दोज एम्प्लॉयज जिनके जो प्लांट में सेफ्टी इश्यूज से दिक्कत कर गए। अब उसके बाद दीज वर द बेसिक डिमांड्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो उसके बाद natural thing happened. The government passed Factories Act 1890. This was the act. And इसमें सरकार ने दिए, or you can say the colonial government provided weekly holiday for all workers. And that too केवल women और children के लिए ही, नॉर्मल वर्कर्स के लिए अब भी नहीं किया। वुमेन के लिए 11 hours per day, चिल्ड्रन के लिए 7 hours per day. Come on, imagine this, 7 hours per day. Currently 8 hours per day है नो इंडिया में। That point of time even children had to work for 7 hours per day, and ये तो केवल पेपर पे था, on paper. Who's going to enforce this thing? कॉलोनियल गवर्नमेंट में जहाँ पे मोस्टली इंडस्ट्रियलिस्ट व ब्रिटिश, ये इन्फोर्स कौन करेगा? और इसमें एक प्रोविजन और भी डाल दिया, में एक और प्रोविजन डाल दिया दैट नन ऑफ द अबव प्रोविजंस, जो भी रिलैक्सेशन दिया, विल बी एप्लीकेबल टू ब्रिटिश ओन्ड टी एंड कॉफी प्लांटेशन।
नहीं है रेस्ट वहां पे भी. So such were the conditions over there. Relaxation is also not feeling like relaxation. तो ऐसा सीन चल रहा है. Obviously there will be reactions against it. इतने issues आने के बाद even the masses got collective consciousness. उनको धीरे धीरे समझ में आने लगा that what are the issues and what is the government response. The government is not responding to our basic issues. If not responding to our even basic issues, what else do we can expect. के बाद से ये सारे एसोसिएशंस बनना स्टार्ट हो गए. Amalgamated Society of Railway Servants in India, Printers Union of Calcutta, Bombay Postal Union, कामगार हितयार्धक सभा. ठीक है. And even various at many places various strikes started to happen. 2 strikes occurred in Bombay. First big strike of mill operatives of Ahmedabad. Strikes in jute industries in Calcutta. Employees of press and machine section of Madras government went on strike. तो ये सब चीजें होने लगी. And obviously strikes at that point of time was not recognized. So the government treated strikes as law and order problem. They started repressing all the workers. So all these were the major issues. And all हम लोग ये सारी चीजें इंडस्ट्रियल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वर द रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एम्प्लॉयर्स वर ईदर रिच इंडस्ट्रियलिस्ट और ब्रिटिश. उन दोनों के बीच में भी गैप है. एम्प्लॉयज एंड गवर्नमेंट वहां पे भी गैप है. तो उस सेंस में आपको रिलेशंस अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे. So before going further, we'll just understand बेसिक है. इसको आप पढ़ लीजिए. ये डिस्क्रिप्टिव में भी काम आता है, सिविल्स में काम आता है, इवन ईपीएफओ में भी काम आएगा. बिकॉज दे कैन आस्क यू व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द लेबर मूवमेंट एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर द ट्रेड यूनियंस केम इनटू पिक्चर. ठीक है. लेबर मूवमेंट की हम बात करेंगे. पहले लीडरशिप, जो भी लीडरशिप मिलती थी, इधर दे वर philanthropists or they were social reformers. People like N.M. Lokhande, इनका न्यूज़पेपर आता था दीन बंधु मित्रा. इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी थी बॉम्बे बॉम्बे मिल्स एंड मिल हैंड एसोसिएशन. ठीक है. तो उसके बाद एज वी कैन सी कि ग्रास रूट मूवमेंट नहीं था, ओनली लीडरशिप लेड, वो भी फिलैंथ्रोपिस्ट एंड इवन सोशल रिफॉर्मर्स. इनकी वजह से मूवमेंट्स स्टार्ट हुए और इन्हीं की बेसिस पे मूवमेंट्स कंटिन्यू करते रहे. अनदर थिंग ये हम बता ही चुके हैं कि ट्रेड यूनियंस उस टाइम पे थे नहीं. इन मॉडर्न सेंस इट वाज नॉट देयर. इन मॉडर्न सेंस बात वही है कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, फॉर्मल सेटअप है. इनफॉर्मल सेंस में अगर आप उसको ट्रेड यूनियन कह लो, तो कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का तो कह लो, बट दे वर नॉट ऑफिशियली ट्रेड यूनियंस. जहाँ पे एक लीडर होता है, he can directly contact with the management and management will rightfully listen to him or her. उस सेंस में ये नहीं था वहां पे. उसके बाद even the methodology of protest were constitutional. बेसिक चीजों के लिए मांग रहे हैं और बेसिक मेथड से पूछ रहे हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स क्या हो गए?
prayers, petitions. बस बाद में ये सब चीजें स्टार्ट हुई है, जैसे मास मूवमेंट, जो स्वदेशी मूवमेंट से स्टार्ट हुआ है, मास मूवमेंट, स्ट्राइक, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन। बट इनिशियली मोटा मोटी दे वर ओनली फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, और फिर उनको रिस्पॉन्स भी ब्रिटिश से वैसे ही मिल रहा। फिर हम बात करेंगे, they were only specific to the concerns of child labor and women workers. Large ambit ही नहीं था. Large ambit, when the communism ideology will come, we'll understand how the large ambit will come. उसके बाद, as I've already told you, strike during that period was considered to be a problem of law and order. अब law and order का problem है, so it is not a rightful thing. So British what used to do? The police acted upon strike aside because using force and false charges लगा देते थे, डंडे मार देते थे, सुनवाई तब भी नहीं है। अब आते हैं what we call it era of formation of modern trade unionism, 1918 1904. This was the period of, एक तो context समझ लें, World War I was ended, Russian Revolution. Russian Revolution was the major factor actually. This was the victory of not communism but people, it said. जितने भी दुनिया के वर्कर्स को लगा that we also can, if Russia can, we also can achieve independence, our rightful rights, और हम लोग भी rightfully अपने राइट्स पा सकते हैं और इवन सरकार में भी आ सकते हैं. As you can see, trade unionism have been started over there, और इससे बहुत सारे ट्रेड यूनियंस started to form. Madras Labour Union, Ahmedabad Textile Labour Union, Calcutta Clerks Union, All India Postal and RMS Association, and even the most famous one, All India Trade Union Congress, started in 1920, 31st October 1920. बेसिक सी चीजें पढ़ लेते हैं इसके बारे में. तो यूजुअली क्वेश्चंस पूछ लेते हैं इसके रिगार्डिंग. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 31st October 1920. Who was the first president? आप सबको पता होगा, लाला लाजपत राय. And who was the general secretary? आप सर्च करके लाइएगा, जस्ट लुक इनटू दिस. मैं तो बता दूंगा, थोड़ी देर में बता भी दूंगा. लुक इनटू, ठीक है. बेसिक से क्वेश्चन से पूछ लेंगे, सिविल्स में भी पूछ लेंगे, ईपीएफओ में भी पूछ लेंगे, तो आप इसको देखो, बाकी थोड़ी देर में मैं बता दूंगा. ठीक है. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, कहाँ पहुंचे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस. ठीक है. बेसिक सी चीज़ें पढ़ लेते हैं. व्हाट वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फॉर्मेशन एंड ग्रोथ. मैंने 2-3 चीज़ें आपको बताई दी. दैट रिवोल्यूशन इन रशिया played a major factor because first workers state
first worker state inspired all the workers of the world that it is possible. We can grow, we can voice our opinion. We are no longer subjects of any rule. This revolution did that. Or even in our country, political conditions were such that all the classes which were not previously active, suppose previously moderates, some revolutionaries were active, but with the arrival of Mahatma Gandhi, इसको हम कहते हैं ना कि वो लोग जो पहले इस मूवमेंट में नहीं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, दे स्टार्टेड टू डू दैट. कौन कौन? वर्कर्स, वुमेन, capitalists. So political conditions forced all the classes to actively participate not only in the national movement but also individually their rights. तो सबको पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस हो गई थी, सबको अपने राइट्स का एहसास होने लग गया था. So they started working not only for independence but then also for their individual rights. Okay, and even the economic conditions of workers played an important role in the formation of trade unions. टाइम पे वर्ल्ड वॉर वन खत्म ही हुआ था. The demand for Indian goods was increased enormously. तो इंडियन वर्कर्स के पास आ गया था लेवरेज. पॉलिटिकल कंडीशंस उनको सपोर्ट कर रही थी. मोटिवेटेड they were because of Russian Revolution. And fourth, there was worldwide unrest because of World War. And also, the most important thing, International Labour Organization was formed in 1919. So they had, उनके पास इंटरनेशनल कंडीशंस भी ऐसी थी जहाँ इनका यूनियनिज्म ग्रो कर सकता है. इंटरनेशनली इवन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वाज created to voice the opinions of workers. So mota moti, all these things were there. And एक और क्वेश्चन, जनरल सेक्रेटरी वाज दीवान. हाँ, जनरल सेक्रेटरी वाज दीवान लाल चमन of All India Trade Union Congress. You can just verify it also. अब एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए. All India Trade Union Congress sent a representative, ठीक है, to ILO कॉन्फ्रेंस. का नाम क्या था? बताइए मेरे को. तो सर्च करिए. ठीक है, इंडिया से एक रिप्रेजेंटेटिव गए थे इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन में. हु वाज दैट? फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रेड यूनियन. सिंस ट्रेड यूनियन पर नाउ रिकॉग्नाइज बिकॉज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, इतने फैक्टर्स के बदौलत ट्रेड यूनियनिज्म में ग्रोथ आया था. और ट्रेड यूनियनिज्म इवन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज दैट. गवर्नमेंट ने एक एक्ट निकाला, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926. They recognized trade union as legal association. That regulated the activities of trade unions. It even provided immunity for trade unions legitimate activities. अब legitimate क्या है वो तो open to interpretation, and even British government restricted these things, such as restriction on political activities, obviously. But motamoti this act tells कि हाँ officially trade unions were recognized. बाद में जाके ट्रेड यूनियन भी स्प्लिट हो गया. यहाँ पे देखें, ऑल इंडिया रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस गॉट स्प्लिट फ्रॉम AITUC. ये बाद में जाके नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन बन गया.
this one. At that point of time split भी होने लगे थे because of ideological lines. Okay, so because of influence of communist ideology, the organization started to lean more toward left. और फिर इसके बाद we are saying that it showed this period also shown remarkable decrease in the intensity of industrial conflict. Communist ideology, they started to voice their opinion for the workers. उन्होंने वर्कर्स के लिए अपना ओपिनियन वॉइस किया. उनके मेथड्स थोड़े वायलेंट थे. So this started to portray trade unions negative for the British. So what British did? They passed Trade Disputes Act 1929 prohibiting strikes and lockouts. ये सब prohibit हो गया. That's why we see reduced intensity of industrial conflicts. So these are the major issues. ठीक है. अब लास्टली हम लोग बात करते हैं 1935 के ऑनवर्ड्स, जो हम लोग के रिलेटेड है मोटा मोटी. As I told you, this All India Trade Union Congress was split to various other organizations. But this period of unity, 1935 में, this period was called period of unity because unity was forced in trade unions. तो जो split हो चुकी थी organization, they started merging with All India Trade Union Congress. At the end, they become whole. And that's why the trade unionism or the workers' welfare protests, they started seeing upsurge. Okay. And at this point of time, we also see a very important state enactment, Bombay Industrial Disputes Act. इसके major features पढ़ लेते हैं. Compulsory recognition of the unions, right to workers to get their case represented. It's very important. बस इसी के लिए तो लड़ ही रहे हैं. जो भी grievances हैं, we need a platform जहाँ पे हम लोग अपने grievances represent कर पाए. Certification of standing orders, जो कह रहा है कि employment की conditions क्या क्या होंगी, ये clearly state होना चाहिए with sufficient precision. ये नहीं कि आप बोल ये रहे हो, करवा कुछ और रहे हो. बोल रहे हो 8 घंटे काम करना है, करवा रहे हो 12 घंटे. तो वर्कर्स स्टार्टेड टू वॉइस कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास. सिमिलरली सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रियल कोर्ट. इफ डायरेक्ट बात नहीं हो रही है तो वी नीड एन इंडिविजुअल independent authority which can resolve industrial disputes. That's why they say na original as well as appeal wali jurisdiction honi chahiye so that these workers can settle their matters. However, this act also prohibited strikes and lockouts, but some relaxation were there under certain conditions. So, mota-moti, this was the history of evolution of industrial relations in India. हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा जो भी हम लोग ने आज पढ़ा है और उसका आंसर. Who was the representative of India to International Labour Organization?
तो इन द स्टार्ट हम लोग ने पढ़ा इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में, 3 चीज़ें होती हैं, इवन 4, दैट 2 वर्ड से बना है इंडस्ट्री रिलेशंस। इंडस्ट्री होती है जहाँ पे लोग इन्वॉल्व, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल आर एंगेज्ड इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी और रिलेशंस, दैट इंडस्ट्रियल रिलेशन इज द इंटर रिलेशंस बिटवीन द स्टेक होल्डर्स ऑफ दोज पीपल। ठीक है, हम लोग इसमें एम्प्लॉयर की बात कर रहे थे, एम्प्लॉय की बात कर रहे थे, गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, इवन ट्रेड यूनियंस की बात कर रहे थे। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दीज पीपल इज नोन एज इंडस्ट्रियल रिलेशंस। फिर हम लोग ने इवोल्यूशन की बात करी। इवोल्यूशन में हम लोग ने स्टार्ट किया था मिड 19th सेंचुरी से, बिकॉज इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन यूज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम देयर। उसके बाद हम लोग ने 1860 पहला वर्कर्स रिवोल्ट हम लोग ने बताया था इंडिगो रिवोल्ट के थ्रू। नील दर्पण हम लोग ने बात करी थी, जिन्होंने दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण लिखा था, जिसकी वजह से इंडिगो मूवमेंट का पोर्ट्रेयल बहुत लोगों तक पहुंचा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिगो कमीशन बनाई थी टू रिजॉल्व दैट। बाद हम लोग ने फर्स्ट फैक्ट्री कमीशन के बारे में पढ़ा था, बिकॉज ऑफ विच फैक्ट्रीज एक्ट 1818 आया था, तो जिसने केवल कुछ आवर्स रिड्यूस किए थे। हाउएवर इट डिडंट मीट द एक्सपेक्टेशंस विच इंडियंस वांटेड। 1884 में एक और फैक्ट्री कमीशन हुई थी, इसकी बदौलत 1891 का फैक्ट्रीज एक्ट आया था, जहाँ पे ये सारे प्रोविजंस सरकार ने, द कॉलोनियल गवर्नमेंट ट्राइड टू गिव, बट इवन दीज कंडीशंस वर वर्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने देखा था कि सुनवाई उतनी है नहीं, तो ट्रेड सम ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड टू बिल्ड, नॉट ओनली सम, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड टू बिल्ड। स्ट्राइक्स बहुत जगह होने लगी। और हम लोग ने फीचर्स के बारे में बात किया कि इनिशियल लेबर मूवमेंट के फीचर्स क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथोडोलॉजी थी, बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करते थे, एंड इवन रिस्ट्रिक्टेड टू चाइल्ड लेबर एंड वुमेन वर्कर्स, और स्ट्राइक को रिकॉग्निशन नहीं था। बट देन केम द वर्ल्ड वॉर वन, रशियन रेवोल्यूशन, and it started the era of formation of modern trade unionism as we know it today। के बाद बहुत सारे ट्रेड यूनियंस बनते हैं। पॉलिटिकल कंडीशंस, फैक्टर्स जो हम लोग बात करेंगे कि ट्रेड यूनियन क्यों ग्रो कर गया, तो उसमें हम लोग ने बात किया था कि रशियन रेवोल्यूशन, पॉलिटिकल कंडीशंस इन द कंट्री, एंड इवन वर्ल्ड वाइड अनरेस्ट इन द पोस्ट वॉर पीरियड, दीज वर द फैक्टर्स जिनकी वजह से ट्रेड यूनियन कांग्रेस बन गया था। फिर हम लोग ने बात किया था ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के बारे में, बिकॉज द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दिस। तो उन्होंने लीगल एसोसिएशन का रिकग्निशन दे दिया एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए। इट प्रोवाइडेड इम्यूनिटी टू ट्रेड यूनियंस लेजिटिमेट एक्टिविटीज़। लेजिटिमेसी तो डिपेंड करेगा ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के इंटरप्रिटेशंस पे। वी हैव डिस्कस्ड ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच वाज लाला लाजपत राय। बाद ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया 1929 में, जिन्होंने स्ट्राइक्स को प्रोहिबिट कर दिया था, बिकॉज ऑफ विच द इंटेंसिटी ऑफ इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स reduced at that on this in that period। 1935 में हम लोग ने देखा था कि all the split trade unions started to merge and present a united opposition to the British with respect to their rights। okay, और उसके बाद हम लोग ने बॉम्बे इंडस्ट्रियल एक्ट के बारे में पढ़ा, जो कि एक तरीके से सिमिलर ट्रेड डिस्प्यूट्स, हाँ सॉरी, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ऑलमोस्ट सिमिलर है, but there's this one provision which under certain condition prohibition of strike, so a little bit of leniency they gave। yeah, in the next class हम लोग directly अब start कर लेंगे industrial relations concept, definitions, importance, objectives। we'll cover each and everything, factors responsible affecting the industrial relations, parties to IR। अब हम लोग सीधा यूपीएससी ईपीएफओ के रिगार्डिंग जो मेन पॉइंट्स हैं प्योर इंडस्ट्रियल रिलेशंस नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। थैंक यू। इफ देयर इज एनी फीडबैक वांट टू गिव मी, I'll try to improve, I'll try to incorporate as much as possible। if there has been any mistake from my end, please do inform me, I'll try to correct it next time। thank you।